The journey for Goa begins right now. I'm with my dad. He's dropping me to the station and everyone is over there. So yes, मैंने फटफट बोल दिया है because आज दिन भर इतनी घाई में शुरू हुआ है और अभी भी एंड मोमेंट पे हमारी टिकट कैंसिल हो चुकी है. तो हमें जनरल बोगी में ट्रैवल करना पड़ने वाला है. सो द स्टोरी कंटिन्यूज. लाइक ट्रेन में सो चुकी थी, टिकट कैंसिल हो चुके हैं और ये हमारी कुछ हालत है. प्रीतम यहाँ पे कुरकुरे निकाल रहा था. वैसे कुरकुरे निकाल. ये पैंट भूल गया. मैं पैंट भूल गया घर पे. खाई ये तबला बजाते डायरेक्ट आया है. ये ऑफिस से. और ये लेके आया, बोलता है वहाँ पर ओके एम के सी था. तो ये पूरा रेडी था और सर्विस हमें CST में मिलेगा. तो ओके एम के सी स्टोरी बताइए कैसे. ट्रेन है भाई. ट्रेन पास करना नीचे. So finally we are in Braapster, Goa. Good morning. It's the time. Can you show me the time? The time is 6:32. नहीं, मुंबई का निकलने हैं, ऐसे बोलेंगे 6:32. But yeah, the time is 6:32 and we are on the way to Goa. Basically train cancelled, उसके बाद बस, फिर बस काफ़ी टाइम बाद मिली and finally after such a hustle we have this view in front of me, which we were patiently waiting for. Right now we have Preetam. We are sharing this room with him. And ऊपर की सीट पे ये दिख रहा है क्या लोगों को? नहीं, उधर कंपार्टमेंट पे ब्लॉक है क्या? दिख रहा है क्या? फिर भी नहीं हो रहा. गुड मॉर्निंग. कैसे हो? मस्त लग रहे. अभी तक वीडियो देखने में अगर तुम घर पे बैठे हो तो शायद से तुमको ठंडी का मजा नहीं आता रहेगा. अभी फिलहाल के लिए हम हैं, सर्वेश है, ये बाकी 3 है. वहाँ पर एक लाश भी पड़ा हुआ है. हाँ, लाश दिखाओ. तो रात बताने का नहीं था. गोवा जाके जो कॉफिन खरीद के ये ऐसे दृश्यम बनाने वाले थे. तीसरा दृश्यम बनाने वाले. 3 नवंबर को कहाँ थे आप? 3 नवंबर को हम कोल्हापुर में घंटा. 3 नवंबर को हम लोग मुंबई में थे. यही तो पकड़े गए तुम. घूम रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए. जरा स्कैम हो गया. साका देता है का वो बोली. सो ऐसे कैसे तो करके हम गोवा में पहुंच चुके हैं. ओके एम के सी आपका क्या कहना है? महाबलेश्वर गोवा के रास्ते तक पहुंचे. गोवा का जाते जाते हमारे रास्ते भी लग सकते हैं. बट ओके एम के सी हमारे साथ एक दिन और भी तो शायद हम पहुंच जाएंगे, शायद कोल्हापुर टू. बट इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक देखना पड़ेगा कि हम पहुंचते हैं कि नहीं. मैंने ये अभी भी गोवा तक नहीं जा रही है. बस मैं ये टाइटल रखने वाला था मुंबई टू गोवा. अब मैं रखूंगा मुंबई टू शायद गोवा क्वेश्चन मार्क. This is the most beautiful spot that we have ever encountered. Follow me. So let us know if you are enjoying this kind of vlog, this kind of travel. Do mention in the comment box below. Like it, subscribe. तो हम लोग गोवा के स्ट्रीट्स पे निकल चुके हैं अभी एंड वी आर लुकिंग फॉर सम प्लेस टू ईट. अभी ये लोग आगे चले गए हैं, मैं और प्रीतम बच गए थे आखिर में. वी आर हंग्री, वी आर फकिंग हंग्री एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. वी आर सर्चिंग फॉर होटल्स. ये लोग जहाँ पे गए हैं हम इनका पता ढूंढ रहे हैं. प्रीतम स्पॉट देते हुए, डूड एम आई शाइनिंग. ओह व्हाट हैपेंड? व्हाट जस्ट हैपेंड? जस्ट लिसन टू मी. ओके, हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं पे तो खाएंगे, फिर मचाएंगे. अगर कुछ रिकॉर्ड करने मिला तो करेंगे, because I don't know if it's gonna be legal or illegal. Hello people, a very good morning. So this is day 2 in Goa and अभी सब लोग नीचे आए हैं. पता नहीं आज क्या है, बड़ा आज गुंडू का बर्थडे है तो सबसे पहली चीज़ हम गुंडू को विश करेंगे. अच्छा यहाँ पे खाने वाने चल रहे हैं.
हम जा रहे हैं बीच पे। ओए ये व्लॉग कब चालू हो गया? सो वेलकम बैक। किधर गया? सो वेलकम बैक, दिस इज डे 2 एंड दिस इज हाउ वी हैव स्टार्टेड द डे 2। दिस इज माय सवारी, माय घोड़ा घोड़ेकर मेरा घोड़ा घोड़ेकर। और ये रेंट पे नहीं, ये फुकड़ में आता है ये सवारी। अगर आपको बीच पे या फिर गोवा पे ऐसा कोई सवारी चाहिए जहाँ पे आपको चलना नहीं है और कुछ ऐसा बिना चले, आपको बिना मेहनत के ऐसा बीच तक जाना है, तो एक सवारी मिलती है। बस उसका लेके आने का खर्चा आपका है। The most awaited view for this vlog. Finally, I can say we are at Goa. When you're going to the market, you see a lot of things that you would wish to buy, and seriously speaking, I've never seen something like this. It's a beautiful market, and the way it goes, the small tunnel like things, and then you see such beautiful things around. It is amazing. Like, one must try this once. This is how we ended up at the secret lake. So this is a very secretive part of Arambol. So basically this part, it's not connected with any lands. There's no other route to come other than this. So पानी भरने के पहले आपको घर वापस निकल जाना चाहिए, वरना आप यहाँ फंस जाओगे और रात यही काटनी पड़ जाएगी। And the vibe out here, good music. I see some fine people and how's it, dude? Yeah, Sweetwater Lake. Come on. It's just beautiful. This is our ride for today. One and only classic Vespa with Sumit JS while on the wheels.